Today I am sharing very crucial point which you face during your studies, that is distraction, and I will tell you solution of it also. Internal distraction and external distraction. There are two types which we face in our day-to-day life. So what exactly distraction is? It is visual trigger or social interaction or any form of text, music, calls or hunger, fatigue, illness which divert us from the desired area of focus or blocks our desire to do work. So how we can start distractions? The best way to feed your distraction is to overcome it. Now, what are the various causes? The first cause is journal study mood. Many of time we feel that we get bored, we are not in mood to study. Secondly, we doubt ourselves whether we will succeed or not. We are doing very hard work, but what will happen in future? So negative as well as positive thoughts come in our mind regarding our success. So focus on positive ones. Anxiety is also part of that. And being anxious is very common thing. Just a simple solution is that relax yourself, relax your body, soul and mind. Fear of failure. So fight or fright, आपके पास दो ही solution है. So अगर हम fight करेंगे then we can overcome our fear. This is the ultimate solution. This point, ego having confidence is very good thing, but over smartness is dangerous. So challenge yourself to learn things, but know your limits also. And while doing so, don't get fatigued because 6 to 7 hours of sleep is also essential. आप टॉपर से बात करके देखें, वो 12, 13, 15 घंटे भी पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने अपने 7 hours जो स्लीप के हैं उनको डिस्टर्ब नहीं होने दिया टू रिगेन एनर्जी एंड टू डू एवरी वर्क रेगुलर एनर्जी. आप तो सारे बायो के स्टूडेंट्स हो, एटीपी जरूरत पड़ती है एटीपी की. सो हंगर, सो रेगुलर ब्रेक के बाद आप अपने हंगर को फीड करते रहें. सो ये सारे सिम्टम्स हैं. नाउ व्हाट एक्सपर्ट सेज टू ओवरकम these distractions? So there are 7 ways you can overcome these distractions. First of all, turn off all type of notifications. आप अपने कॉल्स, अपने टेक्स्ट, मेल्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही आंसर करें. जितनी भी डिस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज हैं उनसे अपने आप को दूर कर लें. जो गोल्स हैं, जो फोकस है, उसके डेडलाइन सेट करना शुरू करें. और पढ़ाई के टाइम डिस्टर्ब ना हो तो आप हेडफोन यूज कर सकते हैं. जब एक पर्टिकुलर टास्क आपका कंप्लीट हो जाए तो आप अपने आप को रिवार्ड करें, आप अपने आप को एक ब्रेक दें, आप अपनी मस्त चीज खाएं, कोई छोटा सा गिफ्ट अपने आप को दें. अब मैं आपको एशनोवर बॉक्स के बारे में बता रहा हूं जो डू, डिसाइड, डेलीगेट और डिलीट के ऊपर काम करता है. कि डू इट नाउ, डिसाइड व्हाट टू डू एंड हु कैन डू इट इन अ बेटर वे. और जो नहीं है उसको डिलीट कर दें. दिस इज द बेस्ट वे टू डू योर वर्क. नाउ यू नो वेल व्हाट आर द थिंग्स विच आर डिस्ट्रैक्टिंग यू. Try to eliminate it and stay focused, stay calm. You can do it.